So today we are going to start the revision of work, power, and energy chapter. Work as in physics is different from work which we deal with in the daily life. Because in daily life you can do mental work also, but here we will be dealing with the physical work, the mechanical work which is done by the forces. So work hota kya hai basically? How can we define work? We say that work is said to be done whenever force produces displacement in any direction except the direction which is perpendicular to the force. Means you can displace a body in any direction you want, but that displacement should not be perpendicular to the force because if displacement is perpendicular to the force, then we say that it's not doing any work. That force is not changing the energy, it's only changing the direction if it's perpendicular. So we say that work is said to be done if work is said to be done if force produces displacement in a body in any direction except direction which is perpendicular to force. So we can change it like कि अगर हमारे पास एक body है and we are exerting some force on it. You exert certain force on it, say F, and it produces certain displacement S. कि हमने एक body पे force लगाई है F and that force produces displacement and angle between F and S is theta. Then mathematically we can say that it's dot product of force and displacement or Fs cos theta. Now, if we write force as Fs cos theta, this means that this can also be written as in two forms. Either F cos theta into S, or you can say that W is F into S cos theta. Now, what does we mean when we say that F into S cos theta? This displacement S which we have marked, it has two components. अगर ये S से ये angle theta है, then you can say that force has displacement has two components. This one component, it's perpendicular to the force. S cos theta is parallel to the force. So we can say its magnitude of force and the component of displacement. S cos theta कौन सा component है? The component which is parallel to the force. So its force, magnitude of force and component of S parallel to force या in direction of force. Similarly इसको अगर एक और वे में ड्रॉ करें, you apply a certain force F on a body, it produces certain displacement S. You exert a force F, it produces a displacement S, this angle theta.
Now we can also change rather than making the components of displacement, we can make the components of force. Force के components बनाएंगे तो this would be F cos theta. We can say component of force which is parallel to displacement that only produces work. So F cos theta into S. This is component of force which is parallel to S into S. So magnitude of displacement and component of force parallel to S. Now when we write in this form, when we say W is equal to Fs cos theta, it has three parts. F denotes magnitude of force, S denotes magnitude of displacement. Magnitude of force and magnitude of displacement, they will always be positive quantities. So we are left with just this cos theta. अगर ये cos theta positive है, तो work done positive होगा. If cos theta is negative, work done will be negative. And if cos theta is zero, work done will be zero. So in addition to magnitude of F and S, we say that cos theta is the determining factor, whether work done will be positive, negative or zero. So if you first take that, कि हम वर्क को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, we can say that work can be classified into three categories. Positive work, negative work, and zero work. Work done positive कब होगा? Now we are saying that cos theta. Work done positive होगा अगर cos theta positive है. या थीटा एक्यूट एंगल है. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल बनेगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. अगर cos थीटा नेगेटिव है या थीटा ऑब्ट्यूज है, एंड अगर cos थीटा जीरो है, ना एट द सेम टाइम कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो cos थीटा डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा वर्क डन निकाल रहे हो. कि एट द सेम टाइम यू कैन हैव अ एक फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है, दूसरी फोर्स उसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क कर रही है, एंड देयर कैन बी अ थर्ड फोर्स व्हिच इज डूइंग जीरो वर्क ऑन द सेम बॉडी. सो वर्क डन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि पॉजिटिव वर्क लेना है, नेगेटिव लेना है, कैसे लेना है. अगर हम एक एग्जांपल लें, जस्ट होल्ड ऑन. So अगर हम एक एग्जांपल लें, we are pulling a body. We are pulling a body on a rough horizontal surface. Say like if you have a diagram like this. You have a body which is placed on rough horizontal surface. And you exert a certain force on it to pull it. And this body gets displaced. Now, in addition to this F and S, we say that other forces are also acting on the body. The other forces acting on the body will be
एक तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, normal reaction acting upwards, and frictional force. Now, if you see carefully, displacement and frictional force, they make obtuse angle with each other. They're oppositely directed. 180 degree का angle है. So we can say that work done by friction is negative. अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को नोटिस करें या वेट को नोटिस करें, तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट मीन्स वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो. सो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे तो वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड mg. फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन एंड mg का वर्क डन दिस इज जीरो, बिकॉज इन दोनों केसेस में थीटा 90 है. Whereas if you see the applied force, अगर हम अप्लाइड फोर्स को देखें, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज एक्यूट. सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव. सेम बॉडी थी, अप्लाइड फोर्स उस पर पॉजिटिव वर्क कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसी बॉडी पे सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव वर्क कर रही है. एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव, अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का वर्क डन जीरो. अगर हम इसको नेटवर्क की बात करें तो वी से दैट नेटवर्क डन इज वेक्टर सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. कि सारी फोर्सेस ने मिला के जो वर्क डन किया दैट विल बी द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग पॉजिटिव वर्क ज्यादा है या नेगेटिव वर्क ज्यादा है. और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क इक्वल होंगे तो नेटवर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो इन दिस केस. सो नेक्स्ट इज कि अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें, दिस इज हाउ वी राइट इन, अगर हमें एफ और एस का वेक्टर दी, मैग्नीट्यूड दिया और उनमें एंगल दिया, बट इफ वी राइट दिस इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, वी से दैट इफ एफ इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं 3D में लिखूं, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई and S is equals to then work done is F dot S. So this comes out to be S of X plus Z of Z. Now when we talk in these terms, अब हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी काइनेमैटिक्स में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Work is always calculated for a certain time interval or for certain displacement. There is no such thing as instantaneous work. So we say work is always calculated for a certain time interval or certain displacement.
So no instantaneous work is there. We cannot say find work done at particular instant or a particular point. So this thing you should always remember. No such term as instantaneous work. Second point is work done does not depend upon time in which certain displacement is produced. It's independent of the time. Work done does not depend on time in which टाइम पे पावर डिपेंड करेगी बट नॉट द वर्क डन. नो व्हाट अबाउट रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. हमें पता है फोर्स जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, पर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है. तो वर्क रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा. Force does not depend on reference frame, but displacement depends. Implies work done depends on frame of reference. So work done reference frame पे depend करेगा. So these are the important points about work done by a constant force.